Hello, everybody. Namaste. Okay, so welcome to our fourth session. We are discussing my book, Thousand Seeds of Joy. Really, it's the book of goddesses, Lakshmi Ma and Saraswati Ma. I just ask all the questions and they give answers. So, yeah, really happy to continue our journey. I see more people are joining, so we'll just wait 1 or 2 seconds and we will see if there's any questions in the chat. Yep. So, okay. So we'll begin. Okay, so today we are discussing the one of the most interesting parts of this book. There was one scripture more than any that I had a difficult time all my life trying to understand, and that was Mahabharat. I'd seen TV series on it. I had, read Bhagavad Gita, but something about it never made complete sense to me. And I'll give you the reasons why. So I had a lot of questions to the goddesses about Gita, about Mahabharat. And what came out was something totally unexpected. So there is a feminine wisdom in Mahabharat. And that is really, after I read that wisdom, I made peace with Mahabharata. I was like, yes, this makes sense. तो हम हिंदी में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी हिंदी बोलने वाले लोग भी हैं यहाँ पे। तो आज हम चौथा भाग शुरू कर रहे हैं, थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। मैं चैप्टर बाय चैप्टर नहीं कर रहा। 7 सेशंस हैं, 7 पार्ट्स हैं किताब के। एक एक पार्ट पे एक एक लेक्चर है। तो आज का है फेमिनिन विजडम ऑफ महाभारत। तो महाभारत का नारीत्व भरा ज्ञान। तो क्या नारीत्व है महाभारत में? वैसे तो बहुत पुरुषत्व लगता है, मगर एक नारीत्व का ज्ञान है जो लक्ष्मी माँ देती हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। और महाभारत एक ऐसा शास्त्र है जो मुझे बचपन से ही, जब मैंने उसको सुना, तो पूरा समझ में कभी नहीं आया। क्योंकि ऐसा लगा कि ऐसा कैसा शास्त्र है जहां पर भगवान खुद बोलते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें लड़ना चाहिए। तो इसको अपन धर्म कैसे मानेंगे? और यह सवाल हमेशा था मेरे मन में। फिर जब बातें होने लगी और फिर लक्ष्मी माँ ने इसके बारे में पूरा समझाया, तो फिर लगा हाँ, अब ये समझ आ गई। अब ये शास्त्र पूरा समझ में आ गया। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। So as I was saying, this scripture really puzzled me right from my childhood. Because how can God say it's your duty to fight? That's what Lord Krishna tells Arjuna and the Pandav brothers again and again. It's your duty to fight. And there was some wisdom in the aspect that only think of your action, not the fruit. That sounded spiritual to me because that makes you less selfish. You're only dedicated to your work and not the fruit of the work. And I think people who can do that, they are very happy. People who are chasing the fruits of their work, they are really not that happy. This goes to the heart of work. You have to really enjoy your work. If you really enjoy your work, then it's a duty, you work and you have happiness coming out of it.
and you have a happy life. So there was wisdom there. But the part there's your duty to fight, that would puzzle me. And so, how do you make peace with that and all other religions? Hinduism is more about non-violence, about, you know, the Vedas and Vedanta, Bhakti path. It's not such a, it's we don't have violence as much. Then Buddhism, Jainism have zero violence. Jainism is based on non-violence, ahimsa. So how can one major path, Bhagavad Gita, basically say it's your duty to fight? And that puzzled me. So I asked this question to Lakshmi Ma. And if you look at this part, this entire fourth part, it is divided into four chapters. These four chapters, we will cover the first one later on. We'll start with the soul cycle and then Draupadi and Karna and great lessons. Then in the end, we'll come back to Radha, Krishna, and the gopis. These are the four chapters. So the chapter that we are starting with is the soul cycle. Okay. And this is where the wisdom really starts making sense. You have heard that Lord Krishna was the one who basically initiated the, he basically came between two yugas. So Dwapar Yuga ended and he launched the Kali Yuga with Mahabharat. What does that mean? So divine beings come between yugas because transitions are very important. Between Satyuga and Treta Yuga, there'll be divine beings. Between Treta Yuga and Dwapar Yuga, there'll be divine beings. Generally, divine beings are there mostly in Satyuga. Then the divinity starts reducing. In Treta Yuga, we have less divinity. Then in Dwapar Yuga, we have even less divinity. And Kali Yuga is the most intense time. In Kali Yuga, almost all of divinity is gone. It's the most masculine time. And right now in Kali Yuga, we are living in the most intense time of even Kali Yuga. So Krishna, Lord Krishna, initiates Kali Yuga with the launch of Mahabharata. How do you understand this? Just looking at some messages. Everything is fine. Fine. People can hear me. Yeah. So, how do you understand this? There's something called the soul cycle. And that, when you understand soul cycle, it all will start making sense. What is soul cycle? So, soul is born from the higher self. When it is born, it is full of divinity, full of the essence of God, full of love, full of primordial joy, filled with gratitude. It has what we call our soul feelings because it's a soul. Infinite bliss. So it's filled with all these amazing feelings: bliss, compassion, joy, peace, freedom, gratitude. It does not know its opposite because it's born as a soul. It's a new soul. So a curiosity arises.
in the soul, this is how it happens, that I am all this love, joy, compassion, I'm all of this, and yet, what is it that I am not? What would be the opposite of love? What would be the opposite of joy? A curiosity arises because it has no idea of what pain is, what anxiety is, what sorrow is, what suffering is. It can only think using its perspective, which is only happiness. So for the soul, it's more like an adventure to find out what it is not. It's like for a child, you tell the child, you have to go climb Mount Everest. It's a 4-year-old child. What will the child know? They don't know much about the mountains. They have some idea. It'll be like an adventure. They don't know all that is involved, all the things that can go wrong. So it's a feeling. So in heavens, you cannot, even as you go as a soul now, one day when you die and you go to heaven and you go through the transformation and now you're in heaven. From heavens, if somebody were to ask you what is pain, it would become hard to completely conceptualize and remember. Because by definition, heavenly realms don't have suffering. So when they don't have suffering, as you go through the transformation, it becomes harder. Everywhere you see is light, everywhere you see is joy, and that becomes your memory. It becomes a very distant memory what happened on earth. It is something that we were not. Like you are right now here, and heaven is filled with bliss. And I ask you, what is bliss? Even though you have some conception because you've had moments of great joy, it's still very hard to imagine what's the bliss of heavens. People who've had near death experiences, they say it like, I have no words. There are feelings that I have no words for. There's just such immense bliss, primordial joy, that there's nothing I know on earth that can come close to it. There are no words. Because we cannot imagine that state. We can imagine only from the reference point of what we know. So heaven is so filled with bliss, happiness. From there, you cannot imagine what is its opposite, what is suffering. It is like something like a fuzzy, something that we're not. So great curiosity arises, especially in a new soul. What is it I'm not? And then the soul decides to go in a soul cycle. It gets adventurous and it asks God, I want to know what is suffering. I want to know what is forgiveness. I want to know what I am not. Because it knows one thing, that God or the divine beings who are enlightened souls, this is a new soul, they know that the ascended souls, they do have more wisdom that they can tell. So the new soul wants to be like the ascended beings. So it asks these ascended ones, what is it that I don't know? Because the ascended ones also know what they are not. As great Buddhas and ascended beings, they know what they're not. Also, they know the opposite and they know who they are. So the soul is very curious. So who will step up? Some great friends of the soul, maybe from some previous soul cycles.
and they go, I will come help you. So it wants to learn about forgiveness. Some great soul friend will come and say, I will teach you forgiveness. How will they learn forgiveness? They'll have to incarnate together. The great loving soul will do something to the new soul. That new soul will have to forgive. And this is where the great friend will do something bad to the new soul, will come as the enemy. And then the new soul will have to remember to forgive. So that's what you're told in heavens, that, okay, I'll teach you forgiveness. But the day when you're supposed to forgive, remember the lesson because you wanted to learn forgiveness. And that's how it unfolds. So we start falling because we want to know our opposite. And we want to know it in intensity, complete opposite. So we're going all the way into Kali Yuga. We are becoming completely that which we are not. This was what the soul wanted. Nothing is happening without you wanting it to happen. So we fall in stages. From Satyuga, a little bit less of what you're not is Treta Yuga. Little bit more of what you're not is Dwapar Yuga. And what you're completely not is Kali Yuga. Now you've come to a place where there's such little love left. Even love seems all selfish. Soul feelings are so hard to feel. We are mostly living in our minds and emotions, and suffering is everywhere. Look around the world, how deep the suffering is. Many of us are still living in places without wars. Can you imagine what life is like being in Gaza right now, being in many hot spots of the world, being in Ukraine, and being in starving conditions in India also? There's so much poverty in India. Go on the street, there are all these beggars. Can you imagine life from their perspective? These are the same divine souls. They're just newer, so they're going through intense contrast. They wanted to know what they're not. Now, why is it like this? Why do souls even want to know what they're not? And this is where the whole drama plays out. If the higher self, which births the soul, is expanding into more bliss, then the opposite has to be created. Suppose there was no reason to not create the opposite, then we would not be having this Zoom call right now. We would all be in bliss. Why would we be here? So there must be a reason. Pain, suffering must be needed. That's why they're created. So as the higher self is expanding into more bliss, equal amount of opposite pain has to be created. Creative law of the opposites. But the pain gets divided into billions of souls. Compassionate universe. So a single person never feels infinite pain, only finite, limited. But as we get enlightened, all our souls join together, become the higher self, we can feel infinite joy. The magic of the universe is we feel only finite pain, and as enlightened beings, we can feel infinite joy. Think about it. I just said it, but isn't that magical?
that you will never feel infinite pain. You'll always feel only finite pain. But because we're billions of us, it gets divided. And there were infinite of us, actually. There are more universes and more universes. Infinite beings are there who are feeling just a little more pain than joy. You have joy also, but you feel a little more pain. All that get all that pain gets added up. Opposite of that is infinite joy. Divine beings can feel infinite joy. Because divine beings are few, souls are billions, trillions, infinite. They all come together. So this requires falling. If it requires falling, then we have to come to Kali Yuga. If we have to come to Kali Yuga, then Lord Krishna initiates Kali Yuga. So if you think about Pandavas, they were the new souls because Kunti was given the gift that she could have immaculate conception like Mother Mary. She could just pray to the gods. So you had sun god and wind god and all these gods, and she had children with them. In fact, Karna was the son of Sun, sun god, whom she had before she even was married. And then she had Yudhishthir and Bhima and all these from gods, but not through her husband, but through gods. So these were new souls. They were just born from these infinite beings. And as new souls, they only had love, only had happiness. And now they are put in front of Kauravas who are in the middle of their soul cycle. A soul cycle is a number of incarnations, like say between 60 and 100 goddesses say in a human soul cycle. There could be a cycle around this cycle, which is where you're animal, or there could be a cycle around that cycle where you have been trees and nature, whatever. But in this human soul cycle, in this cycle, let's say there's 60 to 100 births. Some people say 84. It depends, doesn't have to be 84 for everybody. On average, it might be. Some people get enlightened sooner. So, in all of these incarnations falling from Satyuga to Treta, Dwapar, Kali Yuga, you're falling, falling, falling to know what you're not, which is the pain. But it's finite amount of pain. And you have joys also. Just a little more pain, you keep falling. So, because you have to fall in the soul cycle, that is the reason Krishna says, in that context, right now it is your duty to fight. That's the sole purpose, is to fall. So many people say they want to know their sole purpose. How can you find out your sole purpose? The only way to find out is connect to the soul. Only way you do that, it go with the breath, go into the body and feel meditation, feel the emptiness, ask your soul. And purpose can be different when you are at starting of Kali Yuga, then you're supposed to fight. Now, if Lord Krishna, if you were to meditate on him and ask him, what's the purpose of your soul? Now he will have a different answer. Now he'll say you have to rise. Now you have to go through non-violence, through enlightenment. So when people quote Gita and say your purpose is to fight, and they use it for their personal fights, people just fight in their business or whatever, and then they think, oh, Gita says this.
But that's not the reality right now. Right now, we're supposed to rise above fighting. Soul purpose is changed. We're in the ascending part of the soul cycle, not the descending part. So, Pandavas were in the descending part, they had just begun the journey and they were filled with soul feelings. So, it was very hard for them to fall. Yudhishthir was willing to forgive and forget the war. He said, let them take all the land. I'm not interested to Krishna. He said, I really don't want this fighting. Arjuna also said, I don't want this fighting. Let them take everything. But Krishna would say no. And he would send these messages to Draupadi. Draupadi would channel from the higher self and she would persuade all her husbands. And Krishna also would. So it was very hard for divine beings to persuade these new souls to fight because that was not their nature. So Lakshmi Ma says there is soul path and ego path. Okay. Soul path is what you find out from your soul. Ego path is your attachment. So even Pandavas were a little bit in their ego in the sense they resisted following their soul path. They were attached to being good. We want to be good people. We don't want to fight. We are good souls. So initially there was resistance, and Krishna had to persuade them. No, no, you have to descend. And Pandavas have descended. They are amongst us. All the Mahabharat people are amongst us because they were descending. But there's a deeper meaning of that descent. When we come to know who we are not and we experience that pain, then we ascend. That pain has been created, finite amount of pain for everybody, billions of souls. Expansion has happened. That will create its opposite also, which is the infinite bliss for the higher self. Again, think of how magical it is that pain on any person is finite, yet when billions of beings come together, the opposite of that is infinite bliss. So when we get enlightened, we get to feel that. So, of course, we've introduced too many concepts, and some of you might have questions. One is the creative law of opposites. Then there is soul cycle. To fulfill that, we have to fall. And Krishna encouraged Pandavas to fall. The only way to know what your soul purpose is to connect to the soul. If you ask your ego, ego will not agree with that. So initially, in the beginning of the soul cycle, ego resists falling, but then it falls. Kauravas, they were also completely on their soul path. Why? Because they were in the middle of the soul cycle. In the middle of soul cycle, it is very easy for you because you have enough hurt accumulated that emotions have come. You already are into revenge, you're into hate, you're into anger. All of that feelings have come now, and you're just living that through your ego. You have no desire to get enlightened. You're in the middle of the soul cycle. So in the book, Lakshmi Ma says that Krishna could have preached the Gita to Arjuna because he was just beginning and he had the memory of the soul. Or he could have preached it to Karna, who was ending in his soul cycle and he was beginning to remember. But Gita could have never been preached to Duryodhana. He would have remained in his ego. That would have never happened. Duryodhana would have never got the messages from Gita. But he is on his soul path. Soul path and ego path are joined in the middle of soul cycle. You're supposed to fall and you're falling. So we say people are bad, people are good.
they are doing what they are supposed to do. It's part of this whole cycle. They're supposed to fall. Otherwise, why is all this happening? Why is there suffering? If we're not supposed to fall, why are we suffering? Then everybody would be in bliss, right? I mean, why would the universe allow any suffering if it's not needed? It's the creative law of the opposites. Opposites. Finite pain in billions, trillions, whatever number of sentient beings, all in many universes. Opposite of that is infinite joy, because you multiply all that pain with number of people also. There's some accounting economics going on in spirituality. There's laws of physics. There's a law of spiritual physics. That's what's going on. Yeah. So now we are ascending. So cannot preach the same wisdom of Gita now to people. Now you cannot call, you know, Donald Trump or Vladimir Putin and say it's your duty to fight and fight. Now that wisdom is not correct, even though we are at the most intense phase, now we have to rise. Enough pain for so many lives. Each of you had 60 lives, 80 lives, 70 lives. Every life has been painful, suffering. Do you want this to go on forever? No. You've done your part. You've done your part. Now you've come into these workshops with breathing methods, with all of that, because now we are changing. Now we go back. Of course, divine is very compassionate. It already sent us Buddha, Jesus, all these people with all this knowledge. Not so many people got enlightened for thousands of years, but now there'll be mass enlightenment because all that wisdom is there. It's all like a designed, it's all designed. All this wisdom is here, and goddesses are speaking. And now we're supposed to rise, dissolve the karma and rise. Most of us. There could be some souls who are new souls right now also, who will maybe go into the next soul cycle. There's an overlap. But most of the people are rising. So if they're rising, then we have to surrender to spirituality. No more fighting. That wisdom does not apply anymore. Don't quote Krishna and say it's my duty to fight anymore. Now it's more like Gandhiji, non-violence, meditation, vegetarianism, truth. Now we're ascending. That is the wisdom now. Okay. So in this chapter and in the next chapter, the question comes, actually, let's go into the next chapter. The soul cycle you mostly have understood. Why you have a soul cycle. You have to know your opposite. Some pain gets created so that bliss can be created. We go back, all of that. Now, the next chapter is about Draupadi. हिंदी में थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, फिर जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तो हम इतना लंबा नहीं समझाऊंगा, सारांश में. तो मेन जो हम ज्ञान बांट रहे हैं वो ये है कि सोल की एक साइकिल होती है. सोल को गिरना होता है, इसलिए वो गिरती है. सतयुगा से त्रेता युगा, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कल युगा. गिरना क्यों जरूरी है? एक आंसर तो यही है, अगर गिरना जरूरी नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं होते, तो जरूरी होगा, नहीं तो हम यहाँ कैसे पहुंच गए. ठीक है. मगर गिरने का जो मेटाफिजिकल आंसर है वो ये है कि हायर सेल्फ, आपकी पूर्ण आत्मा का एक्सपेंशन हो रहा है, और भी ब्लिस, और भी ब्लिस, इन्फिनिट ब्लिस और बढ़ रही है.
और वो ब्लिस बढ़ने के लिए ऑपोजिट, उसका विपरीत भी पैदा होता है। तो हायर सेल्फ से सोल्स का जन्म होता है, कई सोल्स का, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, अनगिनत। और एक एक सोल के पास खाली फाइनाइट, सीमित पेन और जॉय, सीमित सीमित। पेन भी सीमित है, दर्द भी सीमित है, आनंद भी सीमित है। मगर थोड़ा सा जो दर्द है वो खुशी से, आनंद से ज्यादा होता है। थोड़ा सा जो आपकी सफरिंग है थोड़ी ज्यादा होती है। वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा करके आप अनगिनत से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया अनगिनत सफरिंग। मगर किसी एक बीइंग को अनगिनत सफरिंग नहीं है, सब कुछ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी है। मगर फिर जब एनलाइटन होते हो, वापस आते हो हायर सेल्फ में, तो इन्फिनिट अनंत आनंद महसूस होता है, क्योंकि अब आप एकता में आ गए और उसकी मैथमेटिक्स बराबर हो जाती है। जॉय एंड पेन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये सोल साइकिल इसलिए बनी है कि हम वो जानना चाहते हैं जो हम वो नहीं है, जो हम सफरिंग है, जो सारे, जो सारी, सारा दर्द फैला हुआ है पूरी दुनिया में, हम वो जानने आए हैं। और अब वापस जाने का टाइम है। अब हम वापस असेंशन में आ रहे हैं, वापस अब आनंद में आएंगे, कर्मों को डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि कलयुग के बाद वापस सतयुग आ रहा है। तो जब इसको समझेंगे तो समझ पाएंगे कि कृष्ण भगवान ने पांडवों को क्यों बोला कि तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, तुम्हें लड़ना है। क्योंकि उस सोल का पात है वो। पांडव तो भगवानों से, सूरज भगवान और वायु, इन सब से जन्मे हैं। कुंती ने जन्म दिया है, इमैक्युलेट कंसेप्शन, उसमें पांडु की जरूरत नहीं थी, सीधे भगवानों से। इसकी भी एक सीक्रेट है, ये कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है कि मदर मेरी ने कैसे जीसस को जन्म जन्म दे दिया, जोसेफ के बिना कैसे हो गया ये जो जन्म होता है ना, जिसमें हम सोचते हैं कि जन्म केवल रिप्रोडक्शन बायोलॉजी से होता है, ऐसा नहीं है। अगर बहुत असीम खुशी आ जाए अंदर, वो खुशी आपका बीज बन जाएगा, और वो खुशी से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। असीम खुशी। पुराने टाइम में मातृ सत्तात्मक समाज में ऐसे भी होती थी नारियां, जो इतनी खुशी में आ जाती थी वो जन्म दे सकती थी भगवानों से सीधे, उनको मेल की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने जन्म दिया। मगर ये पांडव जो आए, ये एकदम खुशी में थे, शुरू कर रहे थे अपनी सोल साइकिल। तो इन्हें बहुत तकलीफ हुई अपना विपरीत बनने में। जब देखो कृष्ण भगवान पूछते थे इनसे, बोलते थे यार जाने दो, माफ करो, हमें नहीं लड़ना। युधिष्ठिर भी कई बार बोला ये लेने दो, नहीं लड़ना। मगर कृष्ण भगवान बोलते थे तुम्हारा, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें लड़ना है। तो ये लड़ाई हुई, क्योंकि उनकी सोल, उनका सोल पाथ था, गिरना था। पांडवों को गिरना था द्वापर युग से कल युग में। और पांडव हमारे साथ हैं क्योंकि सोल गिरने आई थी। अब सोल्स उठने आई हैं। अब वो ज्ञान नहीं चलेगा। अब आप सबको ये नहीं बोल सकते सबको कि मेरा कर्तव्य लड़ना, ये मेरी ड्यूटी है। कई लोग इसको अपना अहम, उनका अहम कहता है मुझे लड़ना है, और फिर गीता का नाम ले लेंगे, बोलेंगे मेरी ड्यूटी है, लड़ना है मुझे। अभी रास्ता है अहिंसा का, गांधी जी का। अभी रास्ता है जीसस का, बुद्ध का, महावीर का। अभी रास्ता है प्रेम का, डिवोशन का, वेजिटेरियनिज्म का। अभी वो रास्ता नहीं है कि आपको ड्यूटी के लिए लड़ना है, वो तब का रास्ता था।
अब हम वापस ऊपर जाग रहे हैं। तो सोल साइकिल्स इसलिए बनती है कि नीचे गिरना होता है, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, फिर ऊपर उठना होता है कलयुग के बाद। तो वो असेंडिंग फेज है। तो अब हम असेंडिंग, ज्यादातर आत्माएं असेंडिंग फेज में हैं अभी, गिरने के फेज में नहीं है। ठीक है। तो अभी उठना है। अभी गीता को कोट करना खत्म करिए। हाँ, ज्ञान है कि एक्शन का ही मजा लो, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। फल की तरफ मत देखो। तो जो काम कर रहे हो उसमें ही आनंद आना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर उससे मेरे को फल मिलेगा। आप जो काम करते हो वो आपको, वो काम से आपको खुशी मिलनी चाहिए। उसमें प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें स्पिरिचुअल विजडम है। तो वो किशन भगवान का ज्ञान सही है। तो अब हम जाएंगे, आई गो स्विच बैक टू इंग्लिश। अब हम जाएंगे द्रौपदी के चैप्टर में। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो द्रौपदी, मे बी, अगर हम हिंदी में ही इसको चालू रखेंगे फिर इंग्लिश में आ जाएंगे। ठीक है। तो एक चैप्टर है द्रौपदी और कर्ण। लोग बोलेंगे कैसा टाइटल रखा है चैप्टर का, द्रौपदी और कर्ण, इनमें क्या रिश्ता था? अरे, द्रौपदी जी तो मना कर दिया था ना कर्ण को कि तुम मेरे स्वयंवर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। मना कर दिया था। ये सब कैसे हुआ? तो लक्ष्मी माँ जो द्रौपदी के रूप में ही आई थी, वो बता रही हैं कि मेरा सच्चा प्यार तो कर्ण था जब मैं द्रौपदी के रूप में आई थी। सरप्राइजिंग। मगर ये शास्त्रों में भी लिखा है एक्चुअली। मेरे को अचंभा हुआ ये सुन के। मगर 13वें साल में जब अ, द्रौपदी और पांडव, जब उनको निकाल दिया गया था, जब वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले द्रौपदी ने कन्फाइड किया पांचों पांडवों से। ये है, महाभारत में है कि मेरा दिल तो कर्ण को मैं दे चुकी थी पहले। तो फिर क्या हो गया? उसको स्वयंवर में क्यों नहीं आने दिया? और यहाँ कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जिस दिन स्वयंवर हो रहा था, कर्ण आया और द्रौपदी का जैसे कि सांस रुक गई। उन्होंने देखा कर्ण को। कर्ण में वो तो पहचान, एनलाइटन थी द्रौपदी, 3 चक्र खुले हुए थे। पूरी एनलाइटन नहीं थी, लोअर 3 चक्रास खुले थे। तो उनको महसूस हो जाता था क्या हो रहा है। तो लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी का इनकारनेशन है। तो देख रही थी कर्ण को। उनमें सब कुछ पांचों पांडवों से ज्यादा था। युधिष्ठिर से ज्यादा सच्चाई, करुणा भी ज्यादा, स्किल भी अर्जुना से ज्यादा, सौंदर्य वो भी नुकुल उनसे ज्यादा, जो छोटे 2 पांडव थे। हर चीज में ज्यादा स्किल, ज्यादा सत्य, बड़ा करुणा वाला दिल। तो उनका दिल तो कर्ण पे था। और वो हमेशा सरेंडर में रहती थी कृष्ण भगवान के। तो जैसे कर्ण आ रहे थे तो उनके हायर सेल्फ ने और कृष्ण ने उनको मैसेज दिया कि इनको अलाउ नहीं करना है। तो उन्होंने मना कर दिया। वो एकदम सरेंडर में रहती थी। वहां से कहानी कहानी शुरू हो गई। कर्ण को अच्छा नहीं लगा। तो ये दुख उसका जिंदगी भर रहा कि द्रौपदी द्रौपदी ने मना कर दिया। तो मगर ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि कर्ण का एनलाइटनमेंट होना था उस जिंदगी में। वो उसकी आखिरी जिंदगी थी।
पांच पांडवों की पहली जिंदगी थी, कर्ण की लास्ट लाइफ थी वो, और वो एनलाइटनमेंट में वापस, उसका मतलब कुछ सोल्स आती है कि वो एक ही जन्म लेंगी और वापस जा रही हैं। एवरेज में 80 लाइफ ईयर्स ये सब होता है। कभी कभी भगवान बस एक अवतार लेंगे, वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको एनलाइटनमेंट में जाना था वापस। और फिर लक्ष्मी माँ बताती है कि हम हमेशा अपना सोल पाथ नहीं चुनते। सोल साइकिल में एक सोल पाथ होता है, हर जिंदगी का एक सोल पाथ होता है, और एक नहीं कई होते हैं। अगर किसी ने मेरे पर बहुत गुस्सा किया और मैंने उनको वायलेंट होकर उन उनको इंजर कर दिया, तो एक सोल पाथ बन गया। किसी ने मेरे पे गुस्सा किया, मैंने उनको क्षमा कर दिया, उनकी आंखों में देखा, उनको प्यार से अपना बना लिया, तो दूसरा सोल पाथ खुल गया। कई बार डाइवोर्स हो जाते हैं या शादी बनी रहती है क्योंकि हम कुछ कर बैठते हैं, तो सोल पाथ अलग हो गया। तो हमारा सोल पाथ, कई सोल पाथ है एक्चुअली, डिपेंड करता है कौन से सोल पाथ पर हम चल रहे हैं, जो फ्री विल हो जाती है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे ऐसा कैसे, इतनी रैंडमनेस थोड़ी हो सकती है, फिर सोल पाथ का मतलब ही क्या हुआ। मतलब भी है। जैसे कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, ये आपका सोल पाथ है, ठीक है, मगर आप एग्जिट भी ले सकते हैं, एग्जिट लेके दूसरे हाईवे पे भी जा सकते हैं। अगर एक बार हाईवे पे आ गए और अगर वो वन वे हाईवे है, 50 मील तक वन वे है, जैसे अमेरिका में कई जगह हाईवे में एग्जिट ही नहीं होता कई मीलों तक, अब आपका पाथ डिटर्मिनिस्टिक है। अब आप कहीं और नहीं जा सकते, एग्जिट ही नहीं है। इसीलिए आपने कुछ कर दिया, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब आपको जेल जाना है, सोल पाथ उधर चला गया। अब आप फ्री नहीं रह सकते, आप वो हाईवे पे आ गए विदाउट एग्जिट। मगर एग्जिट भी आते रहते हैं, जहाँ एग्जिट आते हैं आप दूसरे हाईवे पे जा सकते हैं, तो दूसरा सोल पाथ शुरू हो गया। तो इस तरह से डिटर्मिनिज्म भी है, जो बोलते हैं ना कि जो होना है वो तो होगा ही, हाँ वो भी है, मगर फ्री विल भी है, एग्जिट भी आते रहते हैं। तो इस तरह से सोल पाथ बनता है। तो कर्ण का एक सोल पाथ था, वो इस चैप्टर में आता है, जिस दिन कर्ण द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जिस दिन, उस दिन उस दिन सुबह द्रौपदी को एक विजन आया कि आज किसी का एनलाइटनमेंट हो सकता है, आज किसी का बहुत ज्ञान हो सकता है, ऐसी फीलिंग आई। और उसी दिन उनका चीरहरण हुआ। तो जब हो रहा था और उन्होंने सबको देखा, दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था जब, और उन्होंने सबसे विनती करी कि इसको रोको, और पांडव सब कुछ हार गए थे जुए में, द्रौपदी को भी लगा दिया, उसको भी हार गए थे। तो वो सब देख रहे हैं और द्रौपदी विनती कर रही है। और उस दिन कर्ण को लगा, क्योंकि कर्ण ने भी बहुत प्यार किया था द्रौपदी से, कर्ण को लगा मुझे कुछ कहना चाहिए, ये सही नहीं है, थोड़ा सा ख्याल आया। मगर फिर वो अपना मेल ईगो में आ गया, उसको ये याद आया कि द्रौपदी ने ही तो मुझे स्वयंवर में मना किया था आने के लिए। गुस्सा आ गया, उसने भी कुछ गलत शब्द कह दिए द्रौपदी के लिए, काफी गलत शब्द, और उसने वो होने दिया। अब लक्ष्मी माँ बताती है, उस दिन अगर कर्ण ने अपना जो दूसरा आत्मा का रास्ता था, सोल पाथ था, वो चुना होता तो क्या होता। वही सारा चैप्टर है। तो मैंने पूछा क्या होता, तो बोलते हैं अगर कर्ण ने उस दिन
अपने शरीर से जुड़ता, सांसें लेता, आत्मा से जुड़ जाता, कृष्ण भगवान वहीं थे। और जो फीलिंग आई कि मुझे ये गलत है जो द्रौपदी के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत है, सामने खड़ा हो जाता, बोलता बहुत हो गया दुर्योधन, ऐसा नहीं कर सकते, भरी सभा में इतने लोग हैं, तुम इनका चीरहरण ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि प्यार था उसको द्रौपदी से। उस प्यार में अगर आ जाता और ऐसे करता, तो दुर्योधन उसकी उसी वक्त लड़ाई हो जाती। सबको हरा सकता था वो, कर्ण था। सारे के सारे कौरव एक तरफ हो जाते, सबको हरा सकता था, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम ये थी कि दुर्योधन ने उसको राजपाट दिया था। जब सबने उसको मना कर दिया, जब गुरुओं ने उसको नहीं अपनाया, जब कुंती माँ ने उसको छोड़ दिया बचपन में ही, बच्चे के रूप में ही, तो एक दुर्योधन था जो उसका साथी था, उसने उसको राजपाट दिया। तो दुर्योधन गुस्से में बोलता कि हट जाओ, मैं तुम्हारा सारा राजपाट वापस ले रहा हूं। और उनमें एक बहस हो जाती, लड़ाई टाइप हो जाती। कर्ण खड़ा रहता, वो लोग द्रौपदी को छू नहीं पाते। और उस क्षण में जब दुर्योधन सब कुछ ले लेता, तब कर्ण के 3 चक्रों में यादें आती। पहले चक्र में जब मां ने उसको छोड़ दिया, दूसरे चक्र में जब द्रौपदी ने उसको आने नहीं दिया, तीसरे चक्र में जब दुर्योधन अब सारा राजपाट लेके जा रहा है। सारा एक साथ अवेयरनेस आती। और कई बार ऐसे इंटेंस मोमेंट में, युद्ध में भी ऐसे होता है, जब इतनी इंटेंसिटी होती है और आप पूरा सरेंडर करते हैं, तो एनलाइटनमेंट हो जाता है। और उसका एनलाइटनमेंट हो जाता उस दिन, क्योंकि वो द्रौपदी के लिए खड़ा होता, ब्लेसिंग्स होती, उसके तीनों चक्र खुल जाते। और जैसे ही तीनों चक्र खुलते, एकदम खुशी में आ जाता, माइंड एकदम ड्रॉप हो गया है, ब्लिस आ गई है। उस ब्लिस में उसको दिखता, ये पांडव तो मेरे भाई हैं। फिर क्या होता? फिर उसी रास्ते पे चलता। फिर जब कृष्ण भगवान उसको पूछते, हमारी साइड में आ जाओ, कई बार पूछा कृष्ण ने, तो वो स्विच हो जाता। युद्ध 18 दिन की जगह 11 दिन चलता, वैसे ही चलता जैसे चला। केवल कर्ण होने के कारण युद्ध कम चलता, 11 दिन में खत्म हो जाता। और फिर कृष्ण का सारथी कर्ण बनता अर्जुन की जगह। अर्जुन तो पूरे टाइम पूछते ही रहा कि मुझे क्यों मारना है इनको, कि सारा जो कृष्ण ज्ञान समझा रहे थे उसको समझ नहीं आया एंड तक। कर्ण को क्या होता, पहले 3 चक्र तो खुल जाते, फिर जब कृष्ण भगवान उसको ज्ञान देते, तो एक 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 करके उसका पूरा एनलाइटमेंट हो जाता उस ज्ञान से। और गीता लिखी जाती कृष्ण भगवान और कर्ण के बीच। और वो कहानी होती कर्ण के एनलाइटमेंट की। एक एक पॉइंट वो बोलते कृष्ण भगवान, और कर्ण का और ज्ञान होता, और ज्ञान होता, और ज्ञान होता। और आज हम जैसे राम सीता को देखते हैं, वैसे हम देखते कर्ण और द्रौपदी को। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्ण सरेंडर नहीं कर पाया। हमारी जिंदगी में कई क्षण आते हैं जब हमारे को बीमारी होती है, डाइवोर्स होता है, कोई बिजनेस में धोखा दे जाता है, कोई चोट हो जाती है। कई ऐसे ऐसे क्षण आते हैं जब हम माफ कर सकते हैं, या हम गुस्से में और भी लड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अगर हम करुणा को चुनेंगे, क्षमा भाव चुनेंगे, प्यार चुनेंगे, खुशी चुनेंगे, तो एक तरफ जाता है सोल पाथ। अगर हम बदला लेंगे, अगर हम दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, हम घृणा को चुनेंगे, तो अलग सोल पाथ जाता है। सोल पाथ हमारे एक से ज्यादा होते हैं।
ऐसा नहीं कि सारा डेस्टिन्ड है, सब कुछ डेस्टिन नहीं होता। तो इस कहानी का यही मतलब था, कर्ण की कहानी का, कि एक और सोल पाथ भी था कर्ण का, जो उसने नहीं चुना। फिर बाद में विजडम ये आती है कि वो भी एक तरह से अच्छे के लिए ही था, क्योंकि ये भी ज्ञान सीखना था दुनिया को कि भगवान की जीत हमेशा होती है। भले ही कर्ण आया नहीं आया, डिवाइन ऑलवेज प्रिवेल्स। और कर्ण का भी लास्ट में एनलाइटनमेंट हो गया। गलत सोल पाथ चुना तो भी एंड में, जब अर्जुन ने तीर मारा और जब वो मरने वाला था, तब उसने सरेंडर कर दिया कृष्ण भगवान को, और तब उसका एनलाइटनमेंट हो गया। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है कर्ण के सोल पाथ की, जो लक्ष्मी माँ ने बताई। ओके, सो नाउ विल स्विच अ लिटिल बिट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने सुनने वाले, हिंदी में ही करता रहूं क्या, चैट में? Anybody wants this in English? Both are fine. But Barkha, yes. Okay, both are good too. Hmm. So I'll just summarize in English, then we'll move back to Hindi. So we were discussing Draupadi and Karna is the title of a chapter. So we typically think Draupadi married to five Pandavas, she loves Arjun and all the Pandavas. And Draupadi reveals that her true love was Karn. Karn is the same person that she even asked him to not participate in her Swayamvara. She basically said something like he's the son of a low caste person, so she cannot allow him to participate, something like that. And that hurt Karn carried. And then the story shifts to the day they are the Chirharan is happening of Draupadi, where Dusasan is removing clothes from her body, stripping her right in front of hundreds of men. And in that moment, that day when Draupadi had awoken in the morning, she had this strong feeling that somebody could get enlightened today. That was just a feeling she had. And so when this was happening, Karna was also one of the men watching. So initially, he felt this strong impulse to save Draupadi because he did love her once. And Draupadi revealed to Pandav brothers in the 13th year, before the real war happened, just 1 year before, that her true love was Karn. She told this is in the scriptures, she told this to all five Pandavas. So that is where the questioning began and the chapter came. I asked Lakshmi Ma, like, what is all this about? So Karna did have a soul path with Draupadi. If he had stood up for Draupadi that day when the Pandavas were there to, when the Kauravas were doing all of that, if he had stood up that day, what would have happened? He would have come in between Draupadi and the Kauravas, Dusasan and Duryodhana. And then Duryodhana would have taken away the kingdom that he had given to Karn. And in that moment, his lower three chakras would have been exposed. He would remember how his mother gave him up as an infant. He would remember how Draupadi didn't allow him to participate in the Swayamvara. He would then be confronted with the kingdom being taken
first, second, and third chakra, they would have been affected, exposed. Sometimes when you go through an intensity of this, enlightenment can happen. That's why enlightenment happens in wars. Many times you're fighting and you get enlightened because of the intensity. And in that enlightenment, he would have known that Pandavas were his brothers. He would have switched sides. He would have fought with Pandavas. On this soul path where he would have stood for Draupadi, forgiven her, there was enlightenment. And he would have then fought with Pandavas against Kauravas. War would have lasted 11 days. And he would have been the charioteer for Lord Krishna. And in the wisdom the Lord Krishna would give, his higher chakras, fourth, fifth, sixth, would have all opened. Bhagavad Gita would have been a story of Karna's enlightenment. And I forgot to share this in Hindi. After some time, Draupadi would express to Pandavas that I want to marry Karn. Then she would have married Karn. And then her relationships would only be with Karn, the physical relations after that. And the Pandavas would understand. And today we would hear things about, like Ram Sita, we would hear about Draupadi and Karn. So this is a story about soul paths, because we were talking about soul cycles. Each of us has many soul paths. If we act with forgiveness, compassion, love, joy, or we act with revenge, hate, anger, jealousy, we're creating different soul paths. Moment by moment, we can create different soul paths. So Lakshmi ji is just telling you about what could have been Karna's soul path. He would have actually gotten Draupadi to marry him. द्रौपदी की शादी हो जाती कर्ण से, क्योंकि द्रौपदी एक्सप्रेस करती ये सब होने के बाद कि मुझे कर्ण से शादी करनी है। और फिर पांडव और उनके रिश्ते नहीं रहते, खाली कर्ण के साथ रहते। तो ये पूरी कहानी है उस चैप्टर। इंटरेस्टिंग लगी? तो ये फेमिनिन विजडम जो है महाभारत की, अब इसमें लास्ट में क्या आता है कि क्या लेसन्स है महाभारत के। तो पहला लेसन तो सोल साइकिल का है कि इसलिए गिरे हम सब। कृष्ण भगवान ने कलयुग की स्थापना करी, हम गिर रहे हैं। फिर दूसरा लेसन वही है कि अपना अपना जो ड्यूटी है, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, वो तो है ही। फिर और भी लेसन है इसमें। एक लेसन ये है कि जो भी कुछ हुआ, एंड में कर्ण ने अपना सोल पाथ नहीं चुना, जो चुनना था। कृष्ण भगवान ने कितनी बार बोला उनको, बार बार बोला स्विच कर लो, हमारी तरफ आ जाओ। कितने बार उसको परसुएट करने की कोशिश करी, नहीं माना वो। फिर भी जीत तो पांडवों की ही हुई। तो डिवाइन ऑलवेज प्रिवेल्स। कुछ भी आप कर लो, एंड में जीत तो भगवान की होनी है। ये भी एक लेसन है। और लास्ट लेसन है कि कर्ण, ये सब होने के बाद भी बाद में उसका एनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है। तो ये लास्ट लेसन है कि एनलाइटनमेंट तो निश्चिंत है, आप कितना ही वो ले लो, कितना ही आप सोल पास बदल लो, कहीं पे चले जाओ, एंड में तो आत्मा को एनलाइटनमेंट में आना ही है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। बोलते हैं कि जो देवदत्त है बुद्ध धर्म में, अभी तक उसका एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है। काफी साइकिक था वो, क्योंकि उसने थोड़ा सा डाइवर्जन कर लिया सोल पाथ। तो होगा एनलाइटनमेंट, मगर अब देर से होगा। एनलाइटनमेंट निश्चिंत है, हर आत्मा का होगा, खाली आप उसको डिले कर देते हो जब आप सोल पाथ सही नहीं चुनते। ठीक है। तो ये लेसन्स हैं महाभारत के।
सो इस तरह से आप महाभारत को समझोगे तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि ये युद्ध क्यों हुआ, कृष्ण ने क्यों बोला खाली फाइट करो। ये सब होना था क्योंकि सोल डिसेंडिंग साइकिल में थी। तो अब इसके बारे में कुछ सवाल जवाब, एनी क्वेश्चंस ऑन एनी ऑफ दिस बिफोर वी गो टू quickly go to the first chapter we missed, which was Radha and Krishna. Anybody has any comments, questions? Yes, sir. In comment, Interest. I saw about surrenderance. Please explain about surrenderance. Okay, surrender. So surrendering to your soul path, meaning Pandavas didn't want to fall. They were telling Krishna, leave us alone. We don't want to fight. He kept telling them, no, you must fight. He kept telling Draupadi also, tell your husbands they have to fight. Draupadi would listen to Krishna convey the messages to the Pandavas. They really were in the beginning stages, filled with love and all of joy, all the soul feelings. So the soul cycle is you become less and less and less, you fall. They're not fallen enough. So surrender would be, I don't think surrenderance is the word, but surrender would be that you surrender to the soul path. That's what your soul has come to do. If your soul path truly is to be even evil, then you are surrendering to the soul path. But you have to know the soul path. To know the soul path, you again have to meditate, go deeper, especially in this time when everybody is ascending. You can have very different soul paths. Karna had a soul path with Draupadi. He could have gotten everything he wanted. All he had to do was stand up for Draupadi on that day when her Chiran was happening, and Draupadi would have been his wife. And he would have ruled, he would have been taken as a king by Pandav brothers. So he would have gotten everything. So sometimes we don't know and we don't forgive and we don't act out of love and we think we did the best, but you have no idea what could have happened if you had forgiven. Maybe a more profound, a bigger soul path would happen. So surrender to the soul, breathe, become your body, ask your body, what is my soul path? Because your mind won't tell you. Ask your soul, what is your soul path? By that we mean come from forgiveness, love, compassion. Keep asking from that place, and that is surrender. Don't surrender to your ego. Don't say that's what I want to do, and my ego says that's what I want to do, and do that. No, that's not surrender. So, thank you, everybody. A big namaste. Have a beautiful night. Sleep well. And next Tuesday. So, namaste and good seeing you all.